السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ہماری جماعت کا پہلی مرتبہ انڈونیشیا آنا ہوا اور ہماری تشکیل جو 1 مہینے سے زیادہ کچھ مقاصر سے بنی ہے، وہاں جو ہم نے لوگوں کے دلوں میں کام کی عظمت، کام کی اہمیت، قربانی دینے کا جذبہ، آنے والی جماعتوں کی قدر و نصرت، یہ جو دیکھی تو ہم حیران ہو گئے کہ جوان بھی، بوڑھے بھی، علماء بھی ماشاءاللہ پوری طرح کام کی طرف بھی متوجہ ہیں اور آنے والی مہمان جماعتوں کی قدردانی کی طرف بھی متوجہ ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ آئندہ اللہ کی ذات سے بہت بڑی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک ایک ملک کے ایک ایک باشندے کو اللہ اپنا دین کا سچا داعی بنائے گا۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau katakan jamaah kami pertama kali ke Indonesia ini 2 bulan. 1 bulan pertama kami bergerak di Makassar dan sekitarnya, di Sulawesi Selatan, di beberapa tempat. Maka kami dapatkan Masya Allah kesemangatan orang-orang dalam buat ini kerja. Begitu pula kesemangatan mereka dalam nusrah jamaah-jamaah yang berdatangan dari luar negeri ataupun yang lainnya, baik anak muda ataupun orang tua. Di sekian masjid kami dapatkan ini kesemangatan. Masya Allah, kami heran bagaimana ketawajuan, kesungguhan mereka buat ini kerja, bahkan juga nusrah jamaah-jamaah yang datang tersebut. Maka kami berharap ini merupakan suatu modal besar di masa akan datang. Mereka akan dijadikan da'i-da'i yang sungguh-sungguh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. یہ جو چیز جو ہے یہ دعوت کے کام کی اندر کی عظمت کی علامت ہے، اور دعوت کے کام کی جان جو ہے وہ اندر کی عظمت ہے۔ ابھی آپ کا مشورہ ہم نے دیکھا، بہت خوشی ہوئی۔ ماشاءاللہ مولانا سے ہم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کہ یہ 80 حلقے کے ساتھی ہیں، کوئی 40 کلومیٹر سے، کوئی 50 کلومیٹر سے، کوئی نزدیک سے بھی آئے ہیں، لیکن ٹریفک کی وجہ سے دیر سے پہنچے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہر ہفتے اس طرح جمع ہونا، یہ دعوت کے کام کی عظمت کی بات ہے، اور جس کام کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے آدمی اس کو موت تک چھوڑتا نہیں ہے۔ Beliau katakan ketika nilai ini dakwah atau keagungan, kebesaran dakwah terhunjam dalam diri seseorang. Dan ini kami lihat ada perkara tersebut pada orang-orang di Indonesia ini, baik yang kami telah jumpai, saya katakan tadi di Makassar sekitarnya. Begitulah tadi saya ikut dalam musyawarah. Maka selesai musyawarah saya tanyakan kepada Maulana itu, kepada saya beliau tanyakan, berapa jauh mereka ini datang? Saya bilang datang dari berbagai tempat yang jauh, ada yang 40 km, ada yang 60 km, ada yang dekat-dekat sini tapi cukup pancet di jalan kadang-kadang. Saya lihat wajah-wajah kalian Masya Allah dengan semangat, dan setiap minggu datang dari tempat yang jauh, walaupun jalan macet, ini kota besar Jakarta penuh dengan kesibukan. Ini menunjukkan bahwasanya ada di hati-hati kalian keagungan, kebesaran ini dakwah. Dan kalau keagungan, kebesaran dakwah sudah terhunjam di hati seseorang, insya Allah dia tidak akan tinggalkan ini kerja sampai di akhir kehidupan dia. پھر مشورے کی ترتیب جو ہم نے دیکھی وہ بہت خوشی ہوئی۔ عام طور سے مشوروں میں ایک آدمی تقریر کر لیتا ہے، ذمہ دار بیان کر لیتا ہے، لوگ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ کر چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کا مشورہ واقعی مشورہ ہوا۔ اسی انداز سے مشورہ ہونا چاہیے کہ تقاضوں کو سوچنا چاہیے، عزائم کو کرنا چاہیے،
जो काम हो गया उसकी कारगुजारी आनी चाहिए। माशाअल्लाह स्टूडेंट की फ़िक्रें हुई, मस्तूरात की फ़िक्रें हुई, जहाँ ज़लज़ला आया है वहाँ क्या करना चाहिए, ये बड़ी हिकमत की बात है कि जहाँ उम्मत मुस्लिमा पर परेशानी आती है तो ईसाई सबसे पहले पहुँच जाते हैं माल के ज़रिए से उनका ईमान ख़रीदने के लिए। अल्लाह ने आप हज़रात को हिकमत दी कि आपने जहाँ ईसाई मेहनत करते हैं इससे ज़्यादा आपने अपनी जमातों को डाला है और उनकी नुसरत की शक्लें सोची है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर नसीब फरमा दें। Beliau katakan juga, saya lihat suasana musyawarah, Masya Allah, masing-masing orang berani mengutarakan apa yang ada di hati dia. Begitu pula takaza yang lalu pun dikarguzarikan, kemudian takaza yang ke depan apa yang akan dibentangkan, baik itu jamaah-jamaah yang akan diberangkatkan ke luar negeri, dalam negeri, IPB, masturon, pelajar, bahkan jur-jur profesi juga digalakkan. Begitu pula bentangan-bentangan takaza yang lain dibentangkan, maka masing-masing semangat untuk memikirkan ke arah sana. Ini adalah tertib musyawarah yang benar. Kadang-kadang sebagian tempat ada musyawarah satu orang bicara, satu orang saja bicara. Dia sebagai amir, dia terus bicara seakan-akan sehingga orang bilang wah masya Allah, masya Allah. Sehingga seakan-akan ada satu figur saja dalam musyawarah tersebut. Ini bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan seperti tadi, maka semua orang boleh berbicara, semua orang berfikir untuk menyambut takaza-takaza yang akan dibentangkan tersebut. Begitu pula ada gempa terjadi di Lombok, maka masing-masing berfikir untuk mengirim jamaah ke sana. Begitu pula bantuan-bantuan yang bisa kita kirimkan, kita bagikan di sana. Sementara dari pihak lain juga orang-orang Nasrani berusaha untuk memberikan bantuan dengan keuangan atau dengan benda mereka menarik orang beriman kepada agama yang dia inginkan. Tapi alhamdulillah dengan fikir saudara-saudara datang ke sana tidak bosan lagi dan lagi. Bahkan bukan hanya memberikan bantuan berupa materi makanan, tapi juga jamaah dikirimkan, mengajak mereka untuk menyadarkan agar kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang penting kita perlu kita fikirkan dan kita tingkatkan lagi. Jadi bagaimana supaya bentangan-bentangan saja kita wujudkan dan jangan sampai gerak kita dikalahkan oleh gerak-gerak orang Nasrani di pihak sana. Mereka berusaha untuk menarik orang dengan kebendaan yang mereka miliki, tapi kita juga gunakan harta kita, benda-benda kita gunakan untuk memberikan bantuan, tapi dalam waktu yang sama tetap jamaah kita kirimkan lagi dan lagi untuk mengajak mereka kembali kepada Allah. ये माहौल ऐसे नहीं बना दोस्तों, कोई आपके पीछे रोया है, कोई आपके पीछे थका है। चंद इखलास वाले, तकवे वाले, ये दो बुनियादें हैं। जैसे बिजली के दो वायर होते हैं, इखलास व तकवा ये दावत के दो वायर हैं, दो तार हैं। आपके पीछे कोई इखलास वाले, तकवे वाले रोए हैं और आपके लिए दुआएं की है, जिसका ये नतीजा है कि ये नूरानी मजलिस कायम है। अगर आप हजरात भी इखलास और तकवे के साथ चलते रहेंगे और उम्मत के लिए रोते रहेंगे तो आप कब्रों में चले जाएंगे और ये माहौल आपके पीछे बनता चला जाएगा और जितनी खैर वजूद में आएगी ये सब आपके नामा आमाल में होगी। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अकेले थे, लेकिन इखलास था, तकवा था, मेहनत की, अपनी हयाती में कितना अल्लाह के ख़जाने में जमा कराया और इंतकाल कर गए, पूरे आलम में एक हरकत पैदा कर दी। अब कितनी इबादतें, कितनी नेकियां उम्मत कर रही है और ज़रिया मौलाना इलियास साहब बने हैं। मौलाना इलियास साहब की जन्नत का कौन सा दर्जा अल्लाह देगा वो तो हम सोच नहीं सकते हैं। Beliau katakan bahwasanya apa yang kita lihat sekarang, banyaknya pengawalan kawan-kawan yang berangkat dan berangkat, begitulah hadirnya tuan-tuan di sini dengan kelihatan wajah penuh dengan keceriaan dan sebagainya. Ini adalah di belakangnya ada pengorbanan-pengorbanan orang-orang yang ikhlas dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ini adalah merupakan asas daripada ini kerja, ikhlas dan takwa. Sebagaimana ini listrik menyala karena setiap ada aliran dua kabel tersebut, ada min dan plus, jadi dua kabel. Maka kabel ini dakwah adalah takwa, ikhlas dan takwa. Juga disertai dengan tangisan-tangisan. Maka dengan adanya orang dahulu yang mereka buat pengorbanan dengan ikhlas dan juga ketakwaan, dijaga senantiasa perintah Allah, dijauh dari larangan. Dengan tangisan mereka, alhamdulillah ini kerja wujud dan kalian juga berkorban-korban. Syekh Muhammad Ilyas rahmatullah sendiri buat ini kerja.
tapi beliau dengan keikhlasan, dengan tangisan beliau, tadi juga dengan ketakwaan, sehingga wujud ini amal depan kita. Maka kalau sifat ikhlas dan takwa senantiasa masih kita pertahankan, kita buat ini kerja semata-mata karena Allah, tentu dengan ketakwaan juga, jangan sampai ada satu perintah Allah pun yang kita larang atau yang kita langgar atau sunnah Nabi SAW. Maka ini kerja akan berlanjut sampai di hari kiamat, karena janji Nabi SAW, apapun sesuatu yang diniatkan karena Allah pasti akan langgang dan bersambung. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika adanya orang yang ikhlas dan takwa dan mereka menangis dan menangis, Allahu Akbar, kita lihat sekarang jamaah bergerak di mana-mana. Kalau diperlihatkan kepada Allah bagaimana pahala yang Allah dapat berikan kepada Syekh Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih, tidak terbayangkan bagaimana nur yang ada di kubur beliau tersebut, dan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang masuk di kubur beliau dicatat oleh para malaikat. Ini orang yang ikhlas, walaupun dia kerja tidak begitu lama, sekian tahun, 20 tahun barangkali kerja, tapi dengan keikhlasan pahala ribuan tahun di belakang tetap diberikan oleh Allah kepada beliau. Sama kalau hari ini kita juga buat pengorbanan dengan ikhlas dan takwa, kita meninggal dunia sebenarnya tidak berbuat apa-apa lagi, tetapi pahala orang di belakang kita akan Allah berikan juga kepada kita. लेकिन ये इखलास और तकवा पहले दिन नहीं आता। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक आदमी ने कहा कि हजरत दुआ करो इखलास आ जाए। मौलाना ने फरमाया अमल तो करो पहले, अमल करते 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 फिर इखलास आता है, काम करते 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 फिर तकवा आता है। पहले ही दिन इखलास और तकवा यह हासिल नहीं होता, वो तो काम करते करते काम इसको तकवा वाला बना देता है और काम इसको इखलास वाला बना देता है। इसीलिए सहाबाए कराम से पूछा गया कि आप जो ये गज़वे में व सराय में जाते हो तो आपका मकसद क्या है? सहाबा ने कहा इन्नमा हिममुना अल आखिरा, इन्नमा हिममुना अल आखिरा। भाई हमारे इरादे तो अपनी आखिरत बनाने की है, दुनिया बनाना हमारा मकसूद नहीं है। ये सहाबा की अंदर की नीयत थी जो इखलास पर दलालत कर रही है। Tapi ikhlas dan takwa tidak datang di hari pertama. Mungkin hari pertama belum datang, tapi dengan dia terus berkorban, nanti keikhlasan akan datang, ketakwaan juga akan datang. Satu orang minta kepada Syekh Muhammad Ilyas, Syekh doakan agar Allah berikan ikhlas kepada saya. Maka Muhammad Ilyas katakan, saudara kerja dulu, beramal dulu kamu, nanti ikhlas akan datang. Ikhlas akan datang. Kerja, begitu pula buat pengorbanan terus, nanti ketakwaan akan datang. Jadi hadirin yang Allah, ikhlas dan takwa itu hasil daripada pengorbanan. Di saat kita terjun dalam ini kerja, nanti Allah berikan itu sifat ikhlas dan juga sifat takwa dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bergerak bersama dengan Nabi SAW, safar, bahkan juga setelah Nabi wafat mereka juga berangkat ke berbagai belahan dunia, membuka sekian banyak negara. Tapi ketika ditanya untuk apa kalian safar, untuk apa target kalian untuk berangkat tersebut, maka para sahabat Nabi katakan innama himamuna al akhirah, sesungguhnya keinginan kami atau niat kami hanyalah akhirat saja. Jadi para sahabat Nabi berjuang tidak ingin untuk membangun dunia, tidak ingin untuk mendapatkan keduniaan, tapi target mereka yang inginkan adalah bagaimana membangun akhirat untuk mereka di masa akan datang. Jadi target mereka ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ingin mendapatkan keuntungan duniawi yang sementara di dunia ini. मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक आदमी 6 महीने अल्लाह के रास्ते में लगाकर आया। उस ज़माने में 4 महीने चिल्ला बहुत मुश्किल से लोग निकलते थे, 6 महीने लगाकर आया। और निज़ामुद्दीन में आने के बाद उसके दिल में ये बात पैदा हुई कि मैं तो 6 महीने वाला हूँ, हजरत मुझसे मुआनका करेंगे, अपने कमरे में बुलाएंगे, अपने दस्तरखान पर बिठाए कर खाना खिलाएंगे। लिहाजा वो हजरत से मिलने गया, हजरत ने मुलाकात की, बस कोई पूछा ही नहीं। शैतान ने दिल में बात डाली कि भाई यहाँ तो कोई कदर है ही नहीं, कोई 6 महीना ले लगाता, मैंने 6 महीना लगाया, कुछ कारगुजारी भी पूछते नहीं, कोई तारीफ के 2 बोल भी कहते नहीं। शैतान ने कहा चलो भाई चलो तबलीग को सलाम करो, ऐसी तबलीग का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ अपनी कोई भाव और कदर नहीं है। वो सामान लेकर मरकज़ के गेट पर पहुँचा, अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया, अल्लाह ने दिल में बात डाली तूने मौलवी यूसुफ के लिए किया था कि मेरे लिए किया था? तो उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मैंने तो अल्लाह के लिए किया था।
अब ये सामान लेकर वापस मरकज में आने लगा। मौलाना यूसुफ साहब अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। मौलाना ने कहा आओ आओ भाई, 6 महीने में क्या करके आए हो, जरा कारगुजारी तो सुनाओ। जब इखलास पैदा हुआ तो हजरत के दिल में अल्लाह ने बात डाली, और जब अपनी बड़ाई का जज्बा था तो हजरत ने पूछा भी नहीं है। Beliau katakan, Masya Allah, angkat kepala Tuhan, jangan ngantuk soalnya. Nanti takut dapat bidadari yang buta nanti. Dikejutkan Pak, dibangunkan. Tolong dikejutkan. Bahasa Malaysia ini bagus Pak. Dibangunkan itu dikejutkan, biar kaget nanti. Tolong dibangunkan Pak. Beliau katakan di zaman Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi, ada satu anak muda. Dia keluar 6 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu 6 bulan, Masya Allah, pengorbanan besar. Sedikit orang yang keluar, 4 bulan saja jarang waktu itu. Tapi dia keluar tanpa pengorbanan sampai 6 bulan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun pulang ke markas Nizamuddin. Di hati dia terbetik, saya korban 6 bulan keluar jalan Allah. Banyak belajar ini dan sebagainya. Tentu nanti Maulana Yusuf akan memeluk saya, akan menerima saya, akan menanya berbagai macam pertanyaan, senang kepada saya tersebut. Lantas sesampainya di Nizamuddin, Maulana Yusuf pun ada istiqbal, selamat, jabat tangan. Tapi kalau Maulana Yusuf jabat tangan begitu saja, tidak menanyakan apa-apa, tidak menyambut dengan gembira, dengan senang hati, atau menanyakan sesuatu, tidak. Lantas dia pun kecewa. Dia katakan saya sudah korban 6 bulan. Ternyata Maulana Yusuf tidak menyambut saya dengan pelukan. Begitu pula tidak menanyakan karguzari apa-apa. Lalu timbul kekecewaan dalam diri dia. Dia katakan apa artinya pengorbanan saya selama ini tidak dihargai sama. Maka saya tahu belum datang. Itu biasa datang kepada karkun-karkun begitu yang banyak korban. Dia katakan ngapain kamu korban? Datang ke markas, orang tidak memuliakan kamu juga, orang tidak menghargai itu juga. Akhirnya dia bundel, dia punya pakaian tadi, dia pun siap untuk meninggalkan Nizamuddin. Pulang kecewa karena tidak dihormati. Tetapi sampainya di gerbang Nizamuddin, dia berhenti sebentar. Mulai ada pertanyaan di hati dia, loh, kamu ini keluar jalan Allah karena Maulana Yusuf atau karena Allah Subhanahu wa taala? Mulai sadar dia. Dia katakan saya keluar bukan karena Maulana Yusuf, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia katakan sudah, kenapa saya harus pulang? Saya kerja bukan untuk Syekh Yusuf tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia angkat lagi pakaiannya, dia masuk ke Nizamuddin lagi. Ternyata Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi ada di depan pintu rumah beliau, di pintu kamar beliau. Dengan senyuman, sini. Langsung dipeluk oleh Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi dan ditanya bagaimana 6 bulan sebagainya. Jadi hadir maksudnya apa? Ketika itu orang kerja dengan ikhlas, kembali memperbaiki niatnya, maka Allah tanamkan di hati Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi. Allah percikkan itu keikhlasan tadi pada Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi, sehingga beliau mencium itu, melihat, membaca dari itu orang tadi. Akhirnya beliau peluk, beliau tanyakan. Ketika orang tadi kerja ingin supaya dirinya dimuliakan, dibesarkan dan sebagainya, maka tertanam di hati Syekh Yusuf juga tidak ada keinginan untuk istiqbal dia tadi, untuk memuliakan dia. Jadi hadirin, kalau orang tadi ingin mendapatkan kemuliaan, kebesaran dalam dirinya, maka sering mendapatkan kekecewaan dari orang-orang, mendapatkan kekecewaan dari teman-teman dia, dari surah dan sebagainya. Tapi kalau dia betul-betul kerja karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan terima dan Allah tanamkan itu kecintaan tadi di hati setiap orang tersebut. Jadi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang memang keikhlasan ada ujian, tidak datang di hari pertama, pada detik-detik tertentu datang itu keikhlasan. Yang penting bagaimana kita buat ini kerja semata-mata karena Allah, bukan untuk membesarkan diri kita atau karena si fulan dan si fulan. काम और काम करने वाले दो हैं, काम अलग है, काम करने वाले अलग हैं। दोनों की तरक्की जो है वो इखलास, तकवा और कुर्बानी पर है। जितना आदमी इखलास के साथ चलेगा, कुर्बानी के साथ चलेगा, अल्लाह से डरते हुए चलेगा, वो भी तरक्की करेगा और उसके हाथों काम भी तरक्की करेगा। काम कितना तरक्की करता है कि मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो निज़ामुद्दीन में मुकीम थे, जो हमेशा वहाँ पड़े रहते थे, कभी ज़रूरत पड़ी तो छुट्टी लेके घर जाते थे, लेकिन वापस उस वक्त आते थे कि मशवरा मिल जाए। मशवरे की बड़ी अहमियत है कि मशवरे की खैर व बरकत मुझे मिल जाए,
तो वापस ऐसे वक्त में आते थे, मसलन 9 बजे मशवरा आया तो 8 बजे आ जाते थे ताकि मशवरे में शिरकत हो जाए। अब वो 3 दिन घर रहकर आए हैं, अब कोई राय पूछी जाती तो वो घर से आया हुआ आदमी राय देता तो मौलाना यूसुफ साहब फरमाते, तुम राय मत दो, तुम्हारी राय 3 दिन पीछे की है, काम 3 दिन आगे निकल चुका है। Beliau katakan dalam kerja kita ini ada kerja dan ada pekerja atau karkun, orang yang buat kerja. Jadi kerja, ini kerja dakwah, sedangkan pekerja dakwah ya kita ini ataupun ahbab ataupun karkun istilahnya. Maka beliau katakan pekerja dakwah dan kerja akan meningkat kalau tadi senantiasa ada keikhlasan, ada ketakwaan dan juga ada penambahan dalam pengorbanan tersebut. Maka kalau 3 ini ada, yang buat ini kerja dakwah, terus tanamkan keikhlasan, ketakwaan, tambah pengorbanan, hari demi hari dia tambahkan pengorbanan, maka nanti itu orang atau karkun tadi akan senantiasa Allah peliharakan, akan senantiasa Allah tingkatkan, bahkan nanti kerja akan meningkat dengan pengorbanan dia. Beliau katakan banyak dulu mukimin yang tinggal di Nizamuddin, mereka memberikan waktunya sepenuhnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Silakan mereka juga punya rumah, mereka juga punya keluarga, tetapi kalau mereka ingin pulang 3 hari umpamanya ke rumah, itu senantiasa dimusyawarahkan, izin dari kerja agama untuk keperluan keluarga mereka. Tetapi mereka betul-betul meletakkan musyawarah sangat penting sekali, sehingga mereka akan berangkat pulang ke rumah kalau sudah selesai musyawarah. Kalau musyawarah jam 9 umpamanya, jam 8 mereka sudah hadir. Nanti mereka duduk dimusyawarahkan, diminta pendapat, memberikan pendapat dan sebagainya. Kemudian setelah selesai musyawarah baru mereka pulang ke rumah. Nanti setelah 3 hari pulang ke rumah, duduk di Nizamuddin. Maka duduk dalam musyawarah juga mereka. Ketika orang yang baru pulang ke rumah tadi datang, ditanya oleh Maulana Yusuf rahmatullah akan sesuatu pertanyaan kepada ahbab yang hadir dalam musyawarah, maka orang yang baru pulang di rumah tadi angkat tangan, mereka memberikan usul. Ini penting Pak, silakan bangun dulu, jangan tertidur. Maka orang yang baru pulang ke rumah 3 hari tadi, ketika memberikan usul, kata Maulana Yusuf, kamu diam, kamu jangan bicara dulu. Kamu pulang ke rumah 3 hari, maka kamu sudah terlambat buat kerja 3 hari, sedangkan kerja sudah melampaui 3 hari ke depan. Kamu ketinggalan, jadi jangan memberikan usul, karena kerja sudah melompat 3 hari, sedangkan kamu di rumah 3 hari. Jadi kamu duduk saja dulu, jangan sampai memberikan pendapat, memberikan usul. Paham tuan-tuan? मेरे दोस्तों, अल्लाह तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक इबादत है, एक दावत है। अगर इबादत और दावत दोनों जमा हो गई तो आदमी बहुत तरक्की करता है। इसीलिए वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहा, दावत और इबादत दोनों जमा होती है। दावत में पता नहीं चलता, इबादत में तो पता चलता है। आदमी मस्जिद में आया, नमाज पढ़ी, तिलावत की, जिक्र किया, सदका खैरात किया। अब दावत में मशवरे में बैठा, कुछ नजर ही नहीं आया। 3 दिन लगा दिए, कुछ नजर ही नहीं आया। घर घर की मुलाकात की, कुछ नजर नहीं आया। चिल्ला 4 महीना गया, कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन ये ऐसा है जैसे एक आदमी ट्रेन में सफर करे, तो ट्रेन में सफर करेगा तो स्टेशन नजर आएंगे, स्टेशनों पर लोग नजर आएंगे, मकान नजर आएंगे, गांव आएंगे, देहात आएंगे, सब देखेगा और वहां पहुंच जाएगा जहां जाना है वहां। हवाई जहाज में सफर करेगा, कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ यहां तक कि यह भी पता नहीं चलता कि हवाई जहाज चलता है कि नहीं चलता। लेकिन यहां दिनों में पहुंचता है तो वहां घंटों में पहुंच जाता है। यह दावत का काम हवाई जहाज की तरह है। Beliau katakan kalau 2 ini ada dalam diri seorang, ibadah dan dakwah atau dakwah dan ibadah, maka orang jalan untuk sampai kepada Allah 2, beliau katakan, dakwah dan ibadah. Maka kalau dua-duanya ini ada, orang dakwah dan ibadah dan dakwah, nanti dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, makanya Allah firmankan, wa man ahsanu qawlan da'a ila Allah wa amila sholihan. Dia dakwah tapi dia juga beribadah. Beliau katakan kalau ibadah, kadang-kadang kita lihat, Masya Allah, dia sholat 5 waktu berjamaah, dia sholat tahajud, sholat duha, baca Al-Quran, kelihatan ini ibadah. Tapi dakwah kadang-kadang tidak begitu terlihat. Dia hadir musyawarah, duduk, sudah pergi. Apa hasilnya itu musyawarah tadi? Begitu pula nanti dia keluar 3 hari,
Enggak kelihatan apa, seakan-akan apa hasilnya keluar 3 hari tadi. Begitu nanti 40 hari atau 4 bulan. Jadi kesan daripada dakwah seakan-akan tidak ada. Beda dengan ibadah, dia rasakan bagaimana sebagainya. Sebenarnya hadirin kekuatan dakwah ini masya luar biasa. Walaupun dia tidak rasakan, tidak lihat dengan mata, tapi nanti sampainya kepada Allah begitu cepat. Beliau katakan orang naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya umpamanya. Maka di kereta api tadi dia lihat stasiun berhenti, sebentar berhenti mungkin di Cirebon, kemudian di Semarang dan sebagainya. Dia lihat, begitu melihat orang-orang dan dia lihat rumah-rumah dalam perjalanan sehingga sampai dia di Surabaya. Dalam waktu 8 sampai 10 jam dia perhatikan. Tapi kalau dia naik pesawat, dia naik pesawat 1 jam saja lebih kurang. Dia pun tertidur ataupun nggak lihat apa-apa, nggak lihat rumah, nggak lihat sungai, nggak lihat sawah. Tahu-tahunya sampai ke Surabaya. Perjalanan naik kereta api 10 jam, tapi naik pesawat 1 jam. Begitulah perumpamaan ibadah dan dakwah hadirin. Jadi ibadah itu kelihatan, tapi dakwah itu seperti pesawat terbang. Maka tahu-tahunya sudah nyampe ke sana, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebetulnya dia tidak lihat apa kesan itu, tapi sebenarnya ini kecepatan dakwah luar biasa. Walaupun dia sebenarnya tidak lihat apa-apa di bawah, tapi Allah sampaikan dengan cepat kepada tujuan yang dia inginkan. लेकिन हवाई जहाज जितना ऊपर जाता है, जितना तेज चलता है, अगर वो गिरा तो खतरा भी इतना ही है, आदमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए दावत के काम करते करते अगर अंदर में कुछ बीमारियां पैदा हो गई तो वह ऐसा गिरता है कि कहीं का रहता नहीं है। इनमें से एक तकब्बुर है, अपने आप को बड़ा समझना, उज्ब है, अपने काम को अच्छा समझना, मेरे जैसा बयान कोई नहीं करता, मेरी जैसी तश्कील कोई नहीं करता, मेरी जैसी तालीम कोई नहीं करता, मेरी जैसी राय मशवरे में कोई नहीं करता। हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत आ गई और हुब्बे जा, बड़े बनने का जज्बा आ गया तो दाई तो ऐसा गिरता है कि कहीं नहीं रहता, जैसे हवाई जहाज से गिरने वाला, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। Jadi cepat sekali Pak perjalanan naik pesawat ini. Tapi begitu cepatnya itu pesawat terbang. Bahkan semakin cepat semakin tinggi dia terbang sampai di atas awan sana. Nanti kalau jatuh, masya Allah mati semuanya. Bahayanya lebih cepat dibanding dengan naik mobil atau naik kereta api, masih bisa diharapkan ada yang selamat. Tapi kalau jatuh dari pesawat, maka kematian semua akan menanti mereka semua. Begitulah hadirin dalam dakwah ini. Kalau orang sudah dakwah jatuh dari dakwah, masya Allah sama dengan jatuh dari pesawat. Bahayanya lebih daripada bahayanya naik mobil atau naik kereta api tadi. Maka hadirin mau jatuhnya dai itu sangat berbahaya sekali. Kematian akan menjemput dia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di antara penyakit yang sangat besar yang akan menjatuhkan orang dari tempat yang tinggi yang namanya pesawat tadi adalah takabur. Maka kalau ada ketakaburan dalam diri dia tadi, masya Allah, ini penyakit yang pertama yang akan membuat dia akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecepatan ini kerja dakwah. इसलिए अपनी भी हिफाजत करनी है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी हालत थी, डॉक्टर ने बोलने से मना कर दिया था। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह आए, बहुत बड़े आलिम थे। खादिम ने कह दिया, वो पहचानता नहीं था कौन है, कह दिया बोलने की इजाजत ने मिलने की। मुफ्ती साहब वापस जाने लगे। मौलाना इलियास साहब ने अंदर से खबर भेजी। देखो दिलों का दिलों से ताल्लुक होता है। मौलाना इलियास साहब को मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह ने दिल में बात डाली कि मौली शफी को बुला लो। मुफ्ती शफी साहब गए, कहता दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करने के बाद मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह छोटे बच्चे की तरह हिचकियां मार मार कर रोने लगे और यूं कहने लगे, मुफ्ती साहब पता नहीं मैं अल्लाह के यहाँ मकबूल हूं या मरदूद हूं, मेरा काम मकबूल है या मरदूद है। हो सकता है कि इतना सारा काम करके अल्लाह के पास जाऊं और अल्लाह यूं कह दे कि इलियास तू भी मरदूद है, तेरा काम भी मरदूद है, मेरा क्या होगा। देखिए इखलास वाला डरता है और जिसे इखलास नहीं होता वो डिंगे मारता रहता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। मुफ्ती साहब ने फरमाया, हजरत आप भी मकबूल हैं, आपका काम भी मकबूल है। कहा मुफ्ती साहब दलील बताओ। कि दलील आपका रोना है, आप जो रो रहे हैं ये इखलास की अलामत है और अल्लाह की यहां कबूलियत की अलामत है। Beliau katakan Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi korban sampai
sampai nafas yang terakhir. Bahkan di akhir beliau sakit, sakit parah betul, sampai dokter melarang beliau untuk berbicara, nggak boleh. Maka dalam keadaan sakit demikian, beliau berada di kamar, datang Mufti Mufti Syafi'i datang untuk mengunjungi beliau. Sesampainya di Nizamuddin, maka khadim Maulana Ilyas mengatakan, maaf, Maulana Ilyas sedang istirahat, enggak boleh menjumpai tamu, enggak bisa berbicara. Maka Mufti Syafi'i pun akhirnya pulang. Yang penting beliau sudah melaksanakan tugas untuk berkunjung kepada Syekh Ilyas, tapi karena beliau dalam keadaan istirahat dan tidak boleh berbicara oleh dokter memang, maka beliau pun pergi. Tapi antara para aulia ada hubungan batin di antara mereka tersebut. Syekh Ilyas rahmatullahi tahu ada bisikan di hati, ini ada tamu yang penting yang datang. Maka beliau katakan, mana siapa tamu yang datang tersebut? Panggil dia. Ternyata Mufti Syafi'i tadi. Beliau katakan, buka pintu, silakan beliau masuk. Maka beliau masuk, kemudian pintu pun dikunci dari dalam. Kemudian Syekh Ilyas rahmatullahi menangis seperti anak kecil sambil memegang beliau Mufti Syafi'i. Dia katakan, Mufti, saya takut kalau Allah Subhanahu wa taala tidak terima saya, tidak terima amal saya ini. Bagaimana nanti kalau sekiranya saya menghadap kepada Allah, Allah tolak Ilyas, kamu telah tertolak, amal kamu juga ditolak oleh Allah. Maka beliau menangis dan menangis. Maka Mufti Syafi'i katakan, wahai Maulana Ilyas, Allah sudah terima kamu dan amal kamu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Maulana Ilyas katakan, apa bukti bahwasanya saya diterima oleh Allah dan amal saya diterima oleh Allah? Kata Mufti Syafi'i, tangisan kamu itu menunjukkan kamu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikhlas ini hadirin, dia berkorban sampai di akhir kehidupan dia masih takut, menangis kalau amal dia tidak diterima oleh Allah. Takut kalau dia sendiri ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak ikhlas dia akan cerita terus, saya kerja ini, saya gerak ini, saya sudah korban sebagainya. Tidak ada tangisan yang dia ceritakan pengaruh seakan-akan dia yang berbuat segala-galanya. Ini bukti orang tidak ikhlas dalam pengorbanan dia tersebut. Maka hadirin yang Allah, Mufti Syafi'i katakan, Maulana Ilyas, engkau Allah diterima oleh Allah, amal kamu diterima, bukti yang kamu menangis di depan aku sekarang, itulah bukti kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने काम की भी हिफाजत की है, इसलिए एक मरतबा बैतुल्लाह जाकर दुआ मांगी थी कि अल्लाह इस काम में कोई नई चीज कोई चलावे तो उसको चलने मत देना, नई चीज कोई चलावे चलने नहीं देना, ये काम नई चीज को कबूल नहीं करता है। काम जो अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ है और हमारे 3 बड़ों ने काम किया है, इसकी 3 बुनियादें हैं। एक तो आपस का बाहमी मशवरा, और एक इज्तिमाइयत, पूरी उम्मत जुड़ी हुई हो, और एक इखलास। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे, अगर इन तीनों चीजों में कमी आएगी तो बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है। Masyurat istimaiyat, ikhlas. Beliau katakan juga Syekh Ilyas rahmatullahi alaih betul-betul menjaga ini kerja. Bahkan beliau pun mendoa sering panjang di sekitar Ka'bah ataupun di Multazam. Di antara doa beliau, ya Allah, tolong jangan ada perkara-perkara yang baru yang diwujudkan oleh orang di belakangku nanti dalam ini kerja dakwah. Jangan ada usul-usul baru yang mereka letakkan. Ya Allah, orang yang membuat perkara-perkara yang baru dalam ini kerja, jangan kau gunakan mereka dalam ini kerja. Singkirkan mereka daripada ini kerja. Jadi Syekh Ilyas minta kepada Allah agar ini kerja jangan ada lagi orang-orang yang datang kemudian untuk memperbaharui atau membawa perkara-perkara yang baru dalam usul-usul dakwah. Itulah permintaan daripada Syekh Ilyas rahmatullahi alaih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, beliau telah meletakkan asas kerja ini, musyawarah, istimaiyat dan ikhlas. Maka kalau sekiranya 3 ini ada, kita letakkan diri dalam musyawarah senantiasa, istimaiyat pun kita jaga, keikhlasan, maka kita akan dijaga oleh Allah, bahkan kerja pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. अगर इन 3 चीजों के साथ काम चलता रहा, सालों की खैर महीनों में आएगी, महीनों की खैर हफ्तों में आएगी, हफ्तों की खैर दिनों में आएगी, और अगर इन तीनों चीजें न रही, सालों के फितने महीनों में आएंगे, और महीनों के फितने दिनों में आएंगे, और दिनों के फितने घंटों में आएंगे. Maka beliau katakan kalau 3 ini ada, yaitu musyawarah, istimaiyat dan juga ikhlas, maka kerja hidayah yang harusnya dicapai dalam waktu 1 tahun, Allah percepat akan datang dalam waktu 1 bulan saja. Hidayah yang seharusnya akan datang dalam waktu 1 bulan, tapi dalam hitungan hari akan datang. Begitulah yang 1 hari
hanya dalam hitungan jam saja akan datang. Tetapi kalau sekiranya kerja tidak dibuat dengan 3 asas tadi, maka fitnah yang tadinya harus datang 1 tahun, tapi Allah percepat datang dalam 1 bulan saja. Yang seharusnya 1 bulan datang, ternyata Allah percepat dalam hitungan hari saja. Bahkan 1 hari fitnah harus datang, ternyata dipercepat dalam hitungan jam saja. मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम को अकेले नहीं किया, उलमा 16 उनके मशवरे से चलते रहे, अपने मशवरों में इनको बुलाते रहे और इनके सामने अपना काम पेश करते रहे। भाई शरीयत सुन्नत के खिलाफ तो कोई काम मेरा नहीं है, 6 सिफात कोई उनके बनाए हुए नहीं हैं, अल्लाह की तरफ से दिलों में डाले हुए हैं। और उलमा ने इसकी तस्हीह की है कि ईमान, नमाज, इल्म, जिक्र, इकराम, इखलास, खुरूज भी सबीलिल्लाह, ये हदीसों में भी हैं और किताबुल्लाह में भी हैं। मौलाना आपके 6 सिफात कुरान और हदीस की रोशनी में है, इतना अपने आप को संभाला, लेकिन काम चूंकि सादा था, इसलिए शुरू में उलमा इस काम की तरफ माइल नहीं होते थे। क्यों? काम हमारा सादा है, कोई दफ्तर नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई सदर नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई चेयरमैन नहीं, कोई पैसों का जमा करना नहीं और कोई मिंबर नहीं। मस्जिदें हमारी ऑफिस है और पैसे उम्मत की जान और माल है और मिंबर जो है पूरी उम्मत है, काम की हिफाजत इसी में है। इसलिए उलमा की समझ में शुरू में बात नहीं आई। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा कारी तैयब साहब को, बड़े मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब को, बड़े बड़े उलमा को बुलाया और कहा दरवाज़ा बंद करो। और दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने बिस्तर के नीचे से एक खंजर निकाला और कहा कि लो मुझे कत्ल करो, मुझे कत्ल करोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, इसलिए कि मैं गुमराही फैला रहा हूँ। उलमा ने कहा नहीं हजरत, आप गुमराही नहीं फैलाते तो भी साथ क्यों नहीं देते हो? इसके बाद उलमा साथ लगे हैं, अपने काम की इतनी हिफाजत की है। Beliau katakan Syekh Muhammad Ilyas rahmatullahi alaihi, dalam buat ini kerja tidak sendirian beliau. Memang beliau memulai sendiri, tapi beliau merangkul alim ulama bersama dengan beliau. Maka didekati alim ulama, diminta doa dan sebagainya, dan distorkan apa yang beliau kerjakan untuk disimak oleh alim ulama. 6 sifat yang lagi dan lagi kita bicarakan saat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, tentang iman, salat, ilmu ma'az zikr, begitu pula ikram muslimin, ikhlas, dan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah hunjamkan ke hati melalui Ilyas rahmatullahi alaihi. Kemudian beliau pun setorkan kepada ulama, diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Beliau bayankan tentang yang ada hubungannya dalam sifat tersebut. Kemudian beliau minta disimak oleh ulama, betul atau tidak kerja saya ini. Hadirin, tapi ini kerja awalnya memang penuh dengan kesederhanaan. Tidak ada kantor, tidak ada organisasi, ataupun tidak ada macam-macam susunan struktur organisasi yang kita lihat sekarang, sederhana. Maka orang pun sepertinya tidak tertarik untuk ikut dalam ini kerja. Ini kerja sangat sederhana sekali. Kadang-kadang tidak ada kantor, bahkan di bawah pohon saja dan sebagainya. Maka tertutup dengan kesederhanaan sehingga awal-awal orang pun kayaknya tidak tertarik untuk ikut tersebut. Maka Syekh Ilyas tetap buat kerja, dua kerja, tapi tetap merangkul alim ulama. Bahkan dia ingin bagaimana supaya alim ulama mengetahui kerja beliau. Bahkan seketika sudah mulai berkembang, suatu saat beliau undang alim ulama, Qari Thayyib, Mufti Kifayatullah, dan ulama-ulama yang lainnya. Diundang oleh beliau. Ketika mereka datang, masuk di kamar Syekh Ilyas, maka dikunci dari dalam, digembok. Kemudian beliau mengeluarkan golok. Apa? Golok. Harim Allah, yang tidur dengar golok supaya bangun, Pak, nanti disembelih. Maka dikeluarkan golok tadi. Beliau katakan, wahai alim ulama, bunuh aku, sembelih aku. Mereka kaget, kenapa? Kalau sekiranya aku ini melaksanakan perbuatan yang salah, sembelih aku, dan kalian menyembelih aku ini berpahala, supaya aku jangan menjadi aswatu sebenarnya kesesatan di permukaan dunia ini. Tapi alim ulama katakan, tidak, kami tidak akan menyembelih kau. Kau buat kerja yang benar, tidak salah. Lantas kenapa kalian tidak mendukung saya? Kalau saya benar, dukung saya, ikut saya. Makanya ulama pun akhirnya keluar bersama dengan beliau kerja Allah Subhanahu wa taala. कभी अपने आप को अमीर नहीं कहा, लोगों से ये नहीं कहा मुझे अमीर कहो, बल्कि एक मर्तबा किसी आदमी ने मौलाना इलियास साहब के बारे में कोई तारीफ के बात कही। मौलाना इलियास साहब ने कहा, मेरी क्या तारीफ करते हो, मैं तो गली के कुत्ते से बदतर हूं। Jadi beliau hadirin walaupun memimpin ini kerja,
Tapi beliau tidak pernah mengatakan saya amir, tidak pernah. Tapi orang-orang lain saja mengatakan beliau amir jamaah dan sebagainya, memuji kalian. Tapi bahkan ketika melihat orang memuji beliau, beliau pun marah. Beliau kata, apa yang kalian puji dalam diri saya? Saya sesungguhnya tidak lebih mulia daripada anjing yang ada di gang-gang tersebut. हमेशा अपने आप को मशवरे के ताबे रखा। इसके बाद मौलाना इलियास साहब ने फरमाया, मेरे बाद इस काम की लुगाम किसके हाथ में जाएगी, मशवरा करो। बड़े बड़े उलमा मशवरा के लिए बैठे, ऐसे नहीं कि मेरा बेटा यूसुफ है तो मैं इसको अमीर बना दूं, नहीं, मशवरा करो। शेखुल हदीस साहब, मौलाना जकरिया साहब, बड़े मौलाना मदनी अली रहमा, सब बड़े बड़े बैठे कि क्या करना चाहिए। तो सबके दिल में बात आई, मौलवी यूसुफ को जिम्मेदार बना दो, शूरा के साथ, अकेला नहीं, शूरा के साथ जिम्मेदार बना दो। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह का जिक्र बहुत करता है, सिफात देखे हैं, बेटा होना नहीं देखा। मौलाना इलियास साहब के सामने बात रखी। मौलाना इलियास साहब ने कहा, यूसुफ आ जा, हम जा रहे हैं दुनिया से। गले से मिलाया और यूं फरमाया, बेटा यूसुफ हम जा रहे हैं, ये काम है, काम को काम बनाओगे तो काम बाकी रहेगा, खेल बनाओगे तो खत्म हो जाएगा। सुबह मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का पहला बयान हुआ। बड़े बड़े उलमा वहां बैठते थे, इन्होंने पहला बयान सुनकर यूं कहा, जबान यूसुफ की है, बातें मौलवी इलियास की है। Maka Syekh Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih tetap meletakkan diri beliau dalam musyawarah. Walaupun beliau sebagai amir, tapi tidak pernah mengiklankan saya amir, senantiasa bermusyawarah. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, ketika menjelang wafatnya beliau lagi minta pendapat alim ulama, Mufti Kifayatul, begitulah Husain Al-Madani dan banyak ulama lain. Beliau katakan, siapa yang akan lanjutkan kerjanya di setelah aku? Beliau minta pendapat alim ulama. Beliau tidak mengatakan ini anak saya Yusuf nanti akan menggantikan saya, tidak. Karena ini kerja bukan berdasarkan keturunan, tapi menanyakan. Maulana Zakaria juga ada waktu itu, ulama-ulama yang ada. Dan rata-rata semua ulama mengatakan yang akan lanjutkan kerja kamu, usul kami adalah Yusuf rahmatullahi alaih, Maulana Yusuf rahmatullahi alaih. Kenapa mereka memilih Maulana Yusuf? Karena mereka katakan bahwasanya Yusuf adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mereka memberikan usul kepada Syekh Ilyas bahwasanya Yusuf atau Maulana Yusuf yang akan melakukan kerja karena sebagai putra beliau, tapi ada orang yang banyak sifat, khususnya sifat zikir, ta'alluq beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas usul atau pendapat ulama tadi, beliau panggil, Yusuf sini. Waktu itu Maulana Yusuf enggak tidur, Pak, Masya Allah. Dipanggil oleh Syekh Ilyas rahmatullahi alaih. Bangun, Pak. Beliau katakan, Yusuf sini. Lantas dipeluk oleh beliau. Beliau katakan, Yusuf, sekarang ini kerja, kami akan pergi. Saya akan meninggal dunia. Kau lanjutkan ini kerja. Yusuf, kalau sekiranya kamu sungguh-sungguh dalam buat ini kerja, maka ini kerja akan berjalan sampai akhir zaman. Tetapi kalau kamu bermain-main dalam ini kerja, maka nanti ini kerja akan berakhir sebagai permainan-permainan yang lain. Jadi setiap permainan, main bola kah, main kasti kah, main voli kah, semua ada waktu untuk berakhir. Makanya kalau ini kerja, kamu kerja buat dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka akan terus berlanjut. Tapi kalau kamu bermain-main dalam ini kerja, maka ini kerja pun akan terhenti sebagaimana permainan-permainan yang lain. मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में काम बहुत फैला, मुल्कों में गया। साथियों ने कहा मौलाना यूसुफ साहब से, हजरत कोई उसूल की किताब लिख दो आप, उसूल की। हजरत ने फरमाया, मैं कौन हूं उसूल की किताब लिखूंगा? मैं कौन सा हजरत जी हूं? तुम लोग मुझे मानते हो तो मेरी किताब पढ़ोगे, जो लोग नहीं मानते हो नहीं पढ़ेंगे। मैंने तो हयातुस सहाबा लिख दी है, जो पूरी उम्मत के लिए उसूल है। Maka kerja begitu cepatnya berjalan, tersebar di zaman Maulana Yusuf rahmatullahi alaih. Beberapa orang lama datang, Maulana tolong tuliskan satu kitab tentang usul-usul dakwah. Maka beliau katakan, saya ini siapa? Untuk mampu untuk menuliskan satu kitab tentang usul dakwah. Beliau katakan, kalau saya tulis, nanti ada orang yang setuju, ada orang yang tidak setuju. Maka saya tidak akan menulis buku tentang usul-usul dakwah. Tapi beliau katakan, saya akan tuliskan untuk kalian kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka beliau tulis kitab Hayatus Sahabah. Ini adalah bukan daripada pemikiran beliau, tapi adalah mengambil daripada ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi dan kehidupan para sahabat Nabi
untuk dijadikan panduan buat umat sehingga tidak ada khilafiyah bahwa orang yang berhak dicontoh adalah sahabat radhiyallahu anhum. Maka usul dakwah diambil daripada kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. काम की हिफाजत इतनी की है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल लिखवाई थी मौलाना ज़करिया साहब के ज़रिए से कि फ़ज़ाइल लिखो, इसलिए कि उम्मत मसाइल पर बाद में आएगी, पहले फ़ज़ाइल पर आएगी। एक आदमी को प्यासी नहीं है और आप शरबत पेश करो खोया पिएगा। एक आदमी को दीनी मालूम नहीं, आप मसाइल पेश करोगे थोड़ा अमल करेगा। पहले फ़ज़ाइल के ज़रिए से शौक़ पैदा करो, तो फ़ज़ाइल आमाल लिखी। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 6 नंबर पर कुछ हदीसें जमा की। इसका कोई नाम नहीं रखा, कुछ हदीसें जमा की, वो जमा करके अपने पास रखी ताकि किसी को मुताला करना हो, देखना हो तो आसान हो जाए। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने में फ़ज़ाइल आमाल को हटाकर उन 6 नंबर की किताब को उसकी जगह दाखिल नहीं किया, फ़ज़ाइल आमाल ही को रखा। बाद में लोगों ने अपने नाम से इसको छापी है। वो मौलाना यूसुफ साहब ने जमा किया था लोगों के फायदे के लिए, तालीम के लिए नहीं। मुंतखब अहादीस मौलाना यूसुफ साहब का नाम नहीं है, वो बाद वालों ने रखा है। मौलाना यूसुफ साहब की किताब हो और उम्मत का फायदा हो और मौलाना यूसुफ साहब इसको मशवरे में न लावे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो तालीम के लिए लिखी नहीं गई थी, बाद वालों ने अपने नाम के लिए नाम बढ़ा दिया और कहा कि ये भी मौलाना यूसुफ साहब ने इसीलिए लिखी है। अरे मौलाना यूसुफ साहब अगर लिखते तो उनके जमाने में निसाब में दाखिल हो जाती। Beliau katakan Maulana Yusuf rahmatullahi alaih tetap meletakkan fadilah amal untuk dibaca karangan Maulana Zakaria rahmatullahi alaih yang sudah diminta memang sejak Syekh Ilyas rahmatullahi alaih. Maka tetap Maulana Yusuf menetapkan bahwasanya untuk ta'lim adalah kitab fadilah amal. Kenapa? Karena umat waktu itu dalam keadaan tidak memahami akan fadilah-fadilah amal, kesemangatan beramal tidak ada. Maka bagaimana diajarkan masail kalau mereka sendiri tidak semangat untuk beramal? Dibacakan dulu kitab fadilah-fadilah supaya mereka terangsang untuk beramal. Nanti kemudian hari baru mereka datang kepada ulama untuk belajar masail tersebut. Maka hadirin Allah, orang sekarang tidak merasa haus. Dikasih minuman dingin juga tidak ada semangat untuk minum karena dia tidak merasa haus. Tapi kalau orang tidak merasa haus baru akan dikasih itu air. Nah hadirin, hari ini umat tidak merasa penting akan belajar sholat atau belajar agama, maka kita ajarkan masail juga tidak akan ada perhatian ke sana. Untuk itu kita tekankan pentingnya fadilah supaya mereka ada rangsangan untuk mempelajari agama. Maka Syekh Yusuf Maulana Yusuf rahmatullahi tetap menetapkan fadilah amal sebagai kitab yang dibaca secara umumnya. Tapi beliau juga ada cuplikan-cuplikan tulisan-tulisan beliau tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan 6 sifat tersebut. Tapi beliau tidak pernah membuat kitab secara detail bahwa ini kitab adalah karangan saya, nanti akan dibaca. Tidak. Beliau tahu bahwa itulah kitab fadilah amal, itu yang dibaca untuk merangsang orang beramal. Tapi untuk menuliskan beberapa dalil saja untuk rujukan, maka beliau tulis, tapi beliau tidak pernah mencetak itu buku dan tidak pernah mengiklankan kepada orang supaya dia dibaca. Tidak, sampai beliau meninggal dunia. Tapi setelah beliau meninggal dunia, ada orang di kemudian hari menambahkan lagi itu hadis Nabi SAW tadi. Kemudian meletakkan nama beliau, ini adalah karangan Syekh Yusuf rahmatullahi, dan beliau ingin bagaimana ini buku dibaca dan dibaca secara istimai. Padahal Maulana Yusuf sendiri enggak pernah melengkapi itu kitab dan kemudian mencetak dan mengiklankan supaya dibaca itu kitab, tidak ada di zaman Syekh Yusuf rahmatullahi alaih. Kalau memang itu ada tentu akan dicetak di zaman beliau. Tapi orang setelah beliau tadi yang mengaku bahwasanya ini karangan Syekh Yusuf dan beliau ingin supaya ini dibaca dan dibaca ditulis. Nah inilah hadirin yang tidak kita inginkan. Maka mereka katakan kita muntakhab hadis, ini anjuran Syekh Yusuf untuk dibaca, itu sama sekali tidak benar. Maulana Yusuf Sahab रहमतुल्लाह अलैह बयान कुरान और हदीस की रोशनी में करते थे। बड़े बड़े उलमा आकर इस्तिफादा करते थे। शाह अताउल्लाह बुखारी ऐसे जबरदस्त तकरीर करने वाले थे, 12-12 घंटे एक साथ बोलते थे। लेकिन जब मरकज पहुंचे हैं, मौलाना यूसुफ साहब का बयान सुना है, तो यूं फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मौली इलियास से समझा था और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मौली यूसुफ से समझा था। इतना बड़ा आलिम जब बयानों में गलत बातें बयान होने लगी, जुमहूर के खिलाफ तफसीरें होने लगी, तर्जमे अपनी तरफ से होने लगे, सारे उलमा कट गए,
सुलहा कट गए, देवबंद के सारे उलमा कट गए कि काय की तबलीग हो रही है, दलालत है, जहालत है, क्या हो रहा है ये? कुरान की तफसीर अपनी तरफ से हो रही है, इसलिए अपनी हिफाजत 6 नंबर के अंदर है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान, मौलाना इलियास साहब का बयान आप देखो, कुरान हदीस के रोशनी में था। उलमा दंग रह जाते थे कि मौलवी यूसुफ ये बयान कहां से कर रहे हैं। Tadi beliau katakan hadirin, saya terlupakan, bangun tuan-tuan. Ketika Maulana Yusuf rahmatullahi tadi oleh Syekh Ilyas dipeluk untuk buat ini kerja, meninggal dunia beliau. Maka pagi harinya Maulana Yusuf rahmatullahi mulai bayan di depan alim ulama. Ketika beliau bayan dan bayan, maka ulama katakan, ini yang bayan, lisannya lisan Maulana Yusuf, tapi bayannya, isi bayannya bayan Maulana Ilyas rahmatullahi. Kenapa? Karena Maulana Ilyasnya orangnya gagap, ngomongnya tidak lancar. Sedangkan Maulana Yusuf orator, khatib beliau. Jadi bicaranya lancar lisannya Maulana Yusuf, tapi apa yang dibayankan adalah bayan Maulana Ilyas rahmatullahi. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan bahwasanya Maulana Ilyas rahmatullahi itu menjelaskan 6 sifat. Maulana Yusuf juga tidak pernah keluar daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan dari pemikiran beliau sendiri. Beliau dalam bayan-bayan beliau menjelaskan daripada 6 sifat tadi hubungannya Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Begitu Maulana Yusuf rahmatullahi. Maka ulama besar Maulana Ata'ullah Al-Bukhari, Al-Bukhari itu ulama besar di India. Beliau kalau bayan di depan orang sampai berjam-jam hadirin, sekian lama dan detail mengejar Quran dan hadis Nabi SAW. Ulama kondang dikenal waktu itu, orang pun senang semua. Bagaimana kedalaman daripada ilmu beliau tadi, berbicara sekian lama. Maka kalau beliau datang ke Nizamuddin mendengarkan bayan Maulana Ilyas, kemudian juga bayan Maulana Yusuf rahmatullahi, maka beliau berkomentar bahwasanya Maulana Ilyas membayankan la ilaha illallah, sedangkan Maulana Yusuf membayankan Muhammadur Rasulullah. Jadi orang yang begitu alim di tengah-tengah masyarakat dikenal betul memang dengan keilmuan beliau, tapi beliau betul-betul mengakui apa yang dibayankan oleh Maulana Ilyas, apa yang dibayankan oleh Maulana Yusuf tidak pernah keluar daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sehingga alim ulama pun semua menyetujui ini gerak dakwah yang telah dikerjakan oleh Syekh Ilyas, mau dilanjutkan oleh Maulana Yusuf rahmatullahi. Tidak ada celah bidah yang mereka kerjakan. Tapi hari ini generasi berikutnya membayankan dengan seenaknya saya Quran hadis Nabi SAW tanpa disetorkan pada alim ulama, bahkan hanya dapat tantangan-tantangan dan teguran daripada alim ulama. कभी अपने आप को इन्होंने अमीर नहीं कहा, हमेशा मशवरे के ताबे रखा, हर काम मशवरे से, अपने आप को मशवरे से चलाया और अपनों का खादिम समझा। शुरू में निजामुद्दीन में टॉयलेट नहीं थे तो मेवाती तो जंगल में जाता था, लेकिन शहरी लोग जंगल में नहीं जा सकते थे, तो कमरों में, टॉयलेट के कमरों में डिब्बे रखे जाते थे, शहरी लोग उसमें टॉयलेट करते थे। जब वो डिब्बा भर जाता था तो रात को जब मजमा सो जाता था, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इस डिब्बों को अपने सर पर उठाकर जंगल में डाल के आते थे, फिर गुस्ल करते थे, फिर 2 रकअत सलात शुक्र पढ़ते थे और यूं कहते थे, अल्लाह तूने खत्मे नबूवत की बुनियाद पर आने वाले मेहमानों की खिदमत का तूने मौका दिया है। Maulana Yusuf साहब beliau katakan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik Maulana Ilyas ataupun Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, dalam ini kerja senantiasa bermusyawarah dan bermusyawarah. Beliau tidak membuat perkara dengan dimuvekan langsung sendiri tanpa dimusyawarahkan, tidak. Bahkan beliau, walaupun beliau sebagai pimpinan waktu itu, tapi tidak pernah beliau mengiklankan saya amir, tidak pernah. Bahkan beliau merasa saya khadim, saya adalah khadim, berkhidmat untuk kalian. Dan beliau pun setiap membuat kerja langsung bermusyawarah. Dan beliau merasa bukan sebagai seorang amir, tapi sebagai seorang khadim. Beliau katakan dulu di Nizamuddin tidak ada tandas, tidak ada WC. Memang dulu di masjid-masjid di India awal-awal tidak ada WC. Maka orang-orang mewat yang sudah terbiasa buat ini kerja, ada mereka memang di rumah mereka nggak ada WC, mereka pun pergi nanti ke hutan-hutan sana, masih semak-semak atau hutan banyak dulu di Nizamuddin. Tapi banyak juga orang-orang kota mulai berdatangan, maka ada dibuatkan kamar khusus di sana, dibuatkan gentong, ada tiang. Saya pernah juga mengalami itu di India. Nanti mereka berak di sana di gentong tadi, kemudian kasih tanah, nanti istinjanya atau membersihkannya di tempat yang lain. Maka kerjaan Syekh Ilyas dan juga Syekh Yusuf rahmatullahi alaih, di tengah-tengah orang tidur di malam hari, beliau ambil itu gentong yang telah penuh dengan kotoran tadi, beliau buang ke hutan sana. Setelah itu beliau pun mandi, bersihkan badan, dan beliau sholat syukur, ya Allah, aku telah bersyukur Engkau gunakan aku untuk berkhidmat kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. मेरे दोस्तों, हमारे बड़ों ने अपने आप को इतना संभाला है। जब रायगढ़ में इज्तिमा था
हजरत ने साथियों को बुलाकर कहा, देखो उम्मत को तोड़ने मत देना, उम्मत को तोड़ने मत देना, और काम अल्लाह के लिए करना, मेरे लिए मत करना। अगर मेरे लिए करते हो, मैं भी एक सनम और बूत हूं, आज हूं कल चला जाऊंगा। जुमेरात को बात कही बयान के बाद, और जुमा के दिन इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले मौलाना इनाम साहब को बुलाया कि भाई इनाम हम जा रहे हैं। मौलाना इनाम साहब ने फरमाया, हजरत काम बहुत बाकी है, कि अल्लाह ने रास्ता बना दिया है, रास्ते पर चलते रहना, अल्लाह काम लेगा। लेकिन यूं फरमाया, मौली इनाम मुझे अजाब कब्र का डर है, कब्र में मेरा क्या होगा। इतना बड़ा आदमी, और अल्लाह के यह मकाम क्या है कि इंतकाल के बाद एक औरत ने ख्वाब में देखा कि पूरा मजमा जैसे आपका बैठा हुआ, फरिश्तों का मजमा अनगिनत बैठा हुआ है, स्टेज बना हुआ है। मौली यूसुफ साहब एक किनारे पर बैठे हुए हैं। एक फरिश्ते ने आकर मौली यूसुफ साहब के कंधे पर हाथ मारकर यूं कहा, मौली यूसुफ, अल्लाह ये कह रहा है, दुनिया में मेरे बंदों को ईमान और यकीन की बातें सुनाते थे, आज मेरे फरिश्तों को सुनाओ। इतना बड़ा आदमी इस तरीके से खिदमत करता है, और मौत पर इस तरीके से रो रहा है। वो कभी अमानत का दावा नहीं किया। Maulana Yusuf rahmatullahi kerja dan kerja habis-habisan dengan penuh pengorbanan dan juga dengan penuh keikhlasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai di akhir kehidupan beliau betul-betul sakit beliau, tapi terus buat ini kerja dakwah. Sehari sebelum beliau meninggal dunia, maka beliau panggil Maulana In'amul Hasan. Beliau katakan, In'am, sebentar lagi saya akan pergi. Sebentar lagi saya akan pergi. Maka Maulana In'amul Hasan katakan, wahai Maulana Yusuf, kerja masih panjang, masih banyak lagi. Bagaimana kau meninggalkan kami? Kata Maulana Yusuf, jalan sudah aku perlihatkan. Jalan sudah aku perlihatkan. Tinggal kau teruskan saja lagi. Hadirin Subhanahu wa taala, kemudian dan Maulana Yusuf menangis. Beliau katakan, In'am, aku takut akan adanya azab kubur nanti kalau menimpa aku. Jadi sampai beliau yang banyak korban masih takut akan azab di kubur tersebut kalau nanti akan menimpa beliau. Kemudian beliau pun meninggal dunia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, setelah dimakamkan, yaitu dari Lahore dibawa ke Nizamuddin, dimakamkan di sana, maka satu orang wanita yang salehah bermimpi, dan mimpi ini orang-orang saleh, mimpi bahwasanya kumpulan para malaikat banyak sekali yang hadir. Sementara di mimbar, di pojok mimbar sana ada Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi. Maka satu orang malaikat meletakkan tangannya di panggung di pundak Maulana Yusuf. Yusuf, mari sekarang. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, Yusuf, engkau telah lama membicarakan kebesaran, keagungan Allah di hadapan manusia, keyakinan kepada Allah. Sekarang silakan kamu bayan di depan para malaikatku. मेरे दोस्तों, इसके बाद मशवरा हुआ जिम्मेदार किसको बनाया जाए। हमारा हर काम मशवरे से होगा, एक आदमी इस काम को नहीं कर सकता। मशवरे में हमारी हिफाजत है, काम की हिफाजत है। मशवरा हुआ किसको बनाया जाए। बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन, बड़े बड़े सोलहा बैठे, तय हुआ मौलाना इनाम साहब को बनाया जाए। मौलाना इनाम साहब को जिम्मेदार बनाया। वो ज्यादा बयान नहीं करते थे, लेकिन रोते ज्यादा थे। अपने कमरे में अकेले अकेले रोते थे। अपनी जिम्मेदारी का एहसास था, और जहां भी कोई फसाद होता, पूरे आलम में कहीं जलजला आता या कोई सैलाब आता, हजरत ये फरमाते, मेरे गुनाहों की वजह से हो रहा है। कभी अपने आप को अमीर नहीं कहा। Maka setelah wafatnya Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi, alim ulama pun berkumpul, bermusyawarah, siapa lagi akan melanjutkan ini kerja. Maka setelah mereka bermusyawarah cukup lama, hadirin diputuskanlah dengan waktu itu Faisalah Maulana Zakaria bahwasanya yang akan melanjutkan ini kerja sebagai amir adalah Maulana In'amul Hasan. Hadirin Allah, Maulana In'amul Hasan orang yang tidak banyak bicara, tapi beliau ini banyak menangis. Tidak banyak bicara tapi banyak menangis. Beliau sering menangis di kamar beliau sendiri. Menangis bagaimana ini kerja cukup berat, dan menangis bagaimana ini kerja bisa berjalan dengan baik. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, beliau sering di kamar beliau menangis sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada bencana-bencana terjadi di permukaan dunia, baik itu gempa ataupun banjir dan sebagainya, beliau menangis, dia katakan, ya Allah, ini salah saya, ini semua terjadi karena aku yang salah, ya Allah.
Jadi beliau sebenarnya banyak berfikir dan menangis di kamar tersebut, merasa tanggung jawab ini cukup berat, dan setiap apapun bencana terjadi, beliau senantiasa mengatakan ini adalah salah saya, dan tidak pernah dalam bayan-bayan mengatakan saya Amir, tidak pernah mengatakan demikian. एक मर्तबा हज के सफर में थे, एक साल छोड़कर दूसरे साल अकाबिर का काफिला हज में जाता था। हजरत अपने कमरे में बैठे थे, एक अरब आया, इनामुल हसन कौन, शेख इनामुल हसन कौन, शेख इनामुल हसन कौन। लोगों ने मुलाकात कराई। हजरत ने पूछा कहां से आए हो? कि आया नहीं हूं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा है, मैंने ख्वाब देखा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा उनसे जाके मिल, अब दुनिया में इनकी ही बात चलने वाली है। क्यों? इसलिए कि इखलास था, तकवा था, मशवरा था, इज्तिमाइयत थी। Beliau katakan dalam perjalanan haji Maulana Inamul Hasan, beliau biasanya setiap 2 tahun sekali pergi haji. Para masyayikh kita semuanya begitu. Tahun ini haji, tahun depan tidak, tahun depannya lagi haji. Maka dalam perjalanan haji, suatu saat beliau berada di kamar, di tempat beliau tinggal. Satu orang Arab datang, mana Maulana Inamul Hasan, mana Maulana Syekh Inamul Hasan. Mereka bertanya gitu. Dia bertanya demikian. Maka oleh orang-orang ditunjukkan itu Maulana Inamul Hasan. Maka setelah mengucapkan salam bertemu, kata Maulana Inamul Hasan, dari mana engkau datang? Beliau katakan saya tidak datang, tapi saya betul-betul dihantar oleh Allah datang kemari, bahwasanya saya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan salam kepada kamu. Dan beliau katakan untuk sekarang ini ikuti apa yang arahan beliau, ikuti ucapan beliau. अपने आप को इतना छोटा समझा कि एक मरतबा गुजरात का सफर था और अपने मामूलात के कितने पाबंद थे। 59 दिन का सफर था, 59 दिन, साथ में एक दिन कम, 50 और 60, एक दिन कम का सफर था। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, खुसूसी आ रहे हैं, दुनिया वाले आ रहे हैं। मौलाना लाड साहब ने पूछा हजरत इस सफर में आपकी तिलावत का क्या मामूल रहा? कहा मौली अहमद 59 कुरान खत्म हुए, रोजाना का एक। अपने आप को मामूल का इतना पाबंद बनाया। काकोसी मदरसे में आए, भाई फजले करीम जो हमारे बड़ों में से गुजरे हैं, इनका बेटा इदरीस हाफिज कुरान हुआ था, तो हजरत के हाथों दुआ करानी थी। ये काफिला पूरा आया। जब दुआ हो गई तो भाई फजले करीम छोटे लड्डू लाए थे, मिठाई, हर एक को दे दिया। एक लड्डू मौलाना इनाम साहब को दिया और यूं का हजरत थोड़ा खाकर मेरे बेटे इदरीस को खिला दो ताकि बरकत होवे। हजरत ने फरमाया कुत्ता का खाया हुआ नापाक है। अपने आप को कुत्ता समझ रहे, कुत्ता का खाया हुआ नापाक है, कभी अमीर का दावा नहीं किया। Beliau katakan Maulana Inamul Hasan, di samping kegiatan beliau sibuk dalam kerja dakwah, tetap makmulan, yaitu amal-amal harian beliau tetap perhatikan, baik baca Al-Quran, zikir dan sebagainya, tetap beliau kerjakan. Suatu perjalanan pergi ke Gujarat sana, gerak lebih kurang 49 hari, 50 kurang 1 hari. Maka selama bergerak 49 hari tadi, berjumpa dengan semua orang, baik orang kaya, orang miskin, orang awam, khawas dan sebagainya. Beliau terus buat kerja. Maka Maulana Ahmad Lad bertanya, Maulana, selama perjalanan 49 hari bagaimana makmulat atau amal-amal yang amaliyah yang kamu kerjakan? Jadi tertib-tertib dalam kerja dakwah nih, zikir dan sebagainya. Dia katakan, Maulana Ahmad Lad, saya selama 49 hari telah mengkhatamkan 49 Al-Quran. Jadi 1 hari 1 Al-Quran beliau selesaikan membaca beliau. Begitulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat beliau pergi juga ke Kakoshe, itu salah satu tempat di sana, satu desa. Di sana ada pesantren besar, Abdul Karim, Kakoshe ke Madrasah Mu'tamid, Fadlul Karim. Ini ulama. Maka beliau pun mampir di tempat tersebut dan beliau punya anak namanya Abdul Aziz. Kemudian Fadlul Karim ini membagi-bagikan gula-gulaan, manisan kepada orang-orang yang hadir tadi. Kemudian beliau berikan ke salah satunya kepada Syekh Ilyas Maulana Inamul Hasan. Kemudian kata Fadlul Karim, Maulana Fadlul Karim tadi, Maulana, tolong ini manisan engkau makan sedikit. Nanti kasihkan kepada putra aku Abdul Aziz sebagai keberkahan. Berkah-berkah alim ulama.
Maka Maulana Musa katakan, wahai Afdal Karim, makanan yang telah dimakan anjing itu najis. Makanan yang telah dimakan anjing adalah najis. Bagaimana akan dimakankan kepada anakmu? Jadi beliau tidak mengatakan saya amir, tapi beliau mengakui sebagai seakan-akan seekor anjing yang tidak berhak untuk diambil keberkahan untuk orang lain. मौलाना इनाम साहब के बाद अब क्या करें? इसलिए कि मेवात के लोग मौलाना इलियास साहब की अकीदत में लगे थे, वो चाहते थे मौलवी साद अमीर बने, और दिल्ली वाले यूपी वाले चाहते थे मौलाना जुबैर अमीर बने। अब इंतशार हो जाएगा, उम्मत को इंतशार से बचाने के लिए शुरा बनाई। हजरत ने अपनी हयाती में बना दी थी शुरा। मौलाना इजहार साहब, हाजी अब्दुल वहाब साहब, मौलाना उमर साहब, मौलाना जुबैर साहब, ये शुरा एक बनाई। मियाँ जी मेहराब साहब। अब शुरू में शुरा से काम चलता रहा, लेकिन जब एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए, मियाँ जी मेहराब चले गए, मौलाना इजहार साहब चले गए, मौलाना उमर साहब चले गए, तो मौलाना इब्राहिम साहब जो मौलाना साद साहब के उस्ताद हैं, जिन्होंने मौलाना यूसुफ साहब की सोहबत पाई है, मौलाना इनाम साहब की सोहबत पाई है, और जिन पर अल्लाह ने काम खोला है, वो मौलवी साद को कहने लगे, मौलवी साद तुम्हारी शूरा मुकम्मल करो, तुम्हारी शूरा मुकम्मल करो, तुम्हारी शूरा मुकम्मल करो। लेकिन उन्होंने शूरा मुकम्मल नहीं की। यहाँ तक के मियाँ जी मेहराब भी चले गए, मौलाना जुबैर साहब यहाँ रहे, और मौलाना साद साहब रहे, और वहाँ हाजी अब्दुल वहाब साहब रहे। फिर कहा शूरा मुकम्मल करो, उन्होंने शूरा मुकम्मल नहीं की। अब देखा कि वो अपनी तरफ से नए नए बयान ला रहे हैं, नई नई तफसीरें ला रहे हैं, उसूल बदल रहे हैं, काम का नुकसान हो रहा है। 13-14 साल तक मौलाना इब्राहिम साहब ने इनको समझाया है, पास में बैठ के समझाया, खत लिख कर समझाया, खाली सिद्दीकी ने समझाया, लेकिन एक बात मानने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि मौलाना जुबैर साहब चले गए तो इन्होंने चंद साथियों को तैयार किया और उनसे कहा मुझे अमीर मानो और यूं कहो मैं हजरत जी हूं। तब से ये फितने शुरू हो गए, और काम को बचाने के लिए, अरे मेरे दोस्तों, एक आदमी अपने घर में रहता है, उसको अपना घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह छोड़कर जा रहे हैं, तो आप रो रहे हैं और फरमाते, ओ बैतुल्लाह तू मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन क्या करूं, तेरे बाशिंदे मुझे रहने नहीं देते। हमारे बुजुर्ग हंसते हुए निकले हैं, खुशी में निकले हैं, रोते हुए निकले हैं कि अल्लाह काम की हिफाजत इसी में है, कम यहां से निकल जाए। अब निजामुद्दीन की दीवारें रही है, काम नहीं रहा। याद रखना, काम में तब्दीली नहीं आएगी, मरकज बदलता रहेगा। मक्का मुकर्रमा मरकज था, फिर मदीना मुनव्वरा बना, हजरत अली के जमाने में कुफा मरकज बना। मरकज की दीवारों की कोई हैसियत नहीं है, काम की हैसियत है। इस काम को बचाने के लिए मौलाना इब्राहिम साहब, डॉक्टर सनाउल्लाह साहब, प्रोफेसर खालिद सिद्दीकी साहब, मौलाना लाड साहब 50-50 साल जहां निजामुद्दीन में गुजारे थे, वो रोते हुए निकले। Maka setelah Maulana Inamul Hasan meninggal dunia, bagaimana nantinya? Orang-orang Mewat yang betul-betul ta'assub akan Syekh Ilyas menginginkan nanti Maulana Sa'ad yang akan menjadi amir, sementara orang New Delhi sendiri menginginkan nanti Maulana Zubair yang akan menjadi amir. Maka hadirin yang berkata, sebelum wafatnya Maulana Inamul Hasan, beliau telah menjaga ini kerja jangan sampai terjadi kerusuhan. Sesudah beliau nanti, maka beliau bentuklah 10 orang syura alami, yang sudah kita tahu, baik Maulana Izhar sendiri, termasuk Maulana Zubair, begitu pula Maulana Syekh Abdul Wahab dan lain sebagainya. Ada 10 orang yang sudah sering kita sebutkan, termasuk juga Maulana Sa'ad dan juga Miyaji Mihrab. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka setelah wafatnya beliau, mereka ini bergantian untuk menghandle atau bermusyawarah bersama-sama, karena ini kerja nggak bisa dihandle oleh satu orang saja, harus dengan musyawarah dan musyawarah senantiasa. Maka hadirin mereka pun bermusyawarah selama 10 orang berganti-gantian dalam safar-safar di seluruh permukaan dunia. Untuk di Nizamuddin memang mereka bertiga ini hadirin, Maulana Izhar, Maulana Zubair, Maulana Sa'ad secara bergantian. Tapi untuk kaliber di permukaan dunia, baik itu di Istimewa Rewin, Tonggi ataupun di Mekah dan safar yang lain-lainnya, mereka seluruh yang 10 orang itu secara bergantian. Kemudian satu persatu mereka pun telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah, tinggal lebih kurang 5 orang lagi. Maka Maulana Ibrahim, gurunya Maulana Sa'ad,
yang banyak memberikan pendidikan, bahkan beliau yang sudah 50-an tahun hampir berada di Nizamuddin mengatakan, Sa'ad menasihati, sempurnakan surah kalian lagi, yang sudah meninggal gantikan lagi. Ternyata belum juga diindahkan, dihiraukan, sampai akhirnya tinggal Maulana Zubair dengan Maulana Sa'ad di Nizamuddin, dan Syekh Abdul Wahab ada di Pakistan. Lagi dan lagi Maulana Ibrahim mengusulkan, sempurnakan surah kalian lagi. Ternyata belum juga dilaksanakan sampai meninggal Maulana Zubair rahmatullahi alaih. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka setelah meninggal Maulana Zubair rahmatullahi alaih, Maulana Sa'ad pun mengumpulkan beberapa orang yang pecinta-pecinta beliau, dan mulailah waktu itu beliau katakan, saya adalah amir kalian, dan saya adalah amir. Maka beliau minta dukungan-dukungan daripada orang sekitar tadi, dan mereka memberikan dukungan kepada Maulana Sa'ad. Hadirin subhanahu wa ta'ala, sedangkan di pihak lain tetap alim ulama kita menginginkan adanya syura alam itu, sehingga mereka tambahkan dalam musyawarah di Rewin tahun 2015 tersebut. Hadirin, mulai perpecahan tadi di saat-saat Maulana Sa'ad mengiklankan dirinya sebagai amir hadraji, bahkan minta dipanggil hadir, dan orang sekitar beliau pun yang tadi setuju dengan beliau tadi menghadirkan beliau. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini awal daripada awal perpecahan atau fitnah yang terjadi dalam kerja dakwah kita ini. Hadirnya Allah, maka masyayikh kita pun mulai gerah. Bahkan dalam waktu 13 tahun terakhir ini, Maulana Sa'ad, Maulana Zubair masih ada, tapi Maulana Sa'ad yang sering bayan beliau banyak keluar daripada tafsir Al-Quran dan hadis yang telah disampaikan oleh 3 hadirajin yang pendahulu beliau, bahkan dari pendapat-pendapat beliau sendiri dibayankan, sehingga banyak goncangan ataupun yang dirasakan oleh ulama lain. Maka Maulana Ibrahim sebagai guru memberikan peringatan, teguran, baik secara infiradi, secara langsung, bahkan juga ditulis surat kepada Maulana Sa'ad akan kesalahan-kesalahan beliau dalam membayankan itu ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. 13 tahun lamanya, tapi ternyata tidak juga dihiraukan akan teguran daripada guru beliau sendiri, tetap dibayankan lagi dan lagi oleh Maulana Sa'ad, sehingga ulama-ulama pun juga mulai memberikan teguran kepada beliau, baik secara langsung atau melalui Maulana Ibrahim, tapi tetap tidak digubris atau tidak diindahkan. Maka hadirin Allah, tadi setelah meninggalnya Maulana Zubair, beliau mengiklankan, saya sebagai amir, sebagai hadraji, yang tidak mengakui keamiran beliau maka diperintahkan untuk meninggalkan Nizamuddin. Sehingga satu persatu alim ulama kita, Maulana Ahmad meninggalkan, Maulana Ibrahim meninggalkan, Khalid Siddiqi yang sejak awal Nizamuddin, Sana'ullah, begitu pula yang lain-lainnya, Nadir Ali Khan yang sudah hampir 50-an tahun berkhidmat Nizamuddin, mereka telah meninggalkan semuanya. Dan mereka meninggalkan Nizamuddin bukan dengan senyuman, tidak, dengan tangisan, dengan kesedihan. Karena selama 50 tahun mereka telah berkhidmat untuk ini agama, berkhidmat untuk ini kerja, ternyata harus meninggalkan itu Nizamuddin. Sebagaimana menangisnya Nabi kita Muhammad SAW ketika meninggalkan Mekah, bukan dengan senyuman tapi dengan tangisan. Beliau katakan, wahai Mekah, wahai Ka'bah, engkau tahu negeri yang aku cintai adalah engkau. Kalau kaummu tidak mengusir aku tidak akan tinggalkan kamu. Jadi Nabi tinggalkan Mekah adalah dengan penuh tangisan. Kenapa? Untuk menjaga ini kerja, Karena yang perlu dipelihara bukan Mekahnya, tidak, tapi kerja yang harus diutamakan. Bukan markas yang diutamakan, tapi adalah kerja yang diutamakan. Maka sebagaimana sedihnya Nabi SAW meninggalkan kota Mekah waktu itu, tapi demi untuk mengembangkan, untuk menjaga mengembangkan ini kerja, beliau tinggalkan Mekah. Begitulah masyayikh kita, mulai Ibrahim Muhammad Lan, Khalid Siddiqi, Profesor Sana'ullah, baik Nadir Ali Khan dan yang lain-lainnya. Ketika mereka meninggalkan Nizamuddin, mereka meninggalkan dengan penuh tangisan, bukan dengan senyuman, tidak. Mereka ingin memberikan kepahaman kepada umat. Yang penting itu bukan tembok daripada markas, tidak, tapi kerja yang ada di markas tersebut. Hadirin subhanahu wa ta'ala, markas boleh berpindah-pindah, tapi kerja tidak boleh berpindah-pindah. Markas boleh berganti-ganti, tapi kerja tidak boleh diganti. Maka hadirin, di zaman Nabi kita Muhammad SAW, beliau tinggalkan Mekah, memindahkan markas dakwah kembali ke Madinah, buat dikerja. Di zaman Sayyidina Ali sudah tidak kondusif lagi Madinah sebagai markas dakwah, terjadinya perang saudara dan sebagainya, tamu nggak bisa dihandle dan jamaah tidak bisa dibentuk, maka beliau pindahkan markas dakwah ke Kufah, berjalan dengan baik, kemudian berpindah lagi di zaman Muawiyah ke Damaskus dan seterusnya sampai sekarang IPB. Nanti juga akan berpindah lagi kembali ke mana, ke kota Madinah. Jadi markas boleh berpindah-pindah, tapi kerja tidak boleh diganti-ganti. सबके आखिर में मौलाना इब्राहिम साहब निकले हैं। लोगों ने कहा कि हजरत, बड़े बड़े उलमा ने कहा कि हजरत आपका ठहरना नुकसान है, इसलिए कि आप वहां रहते हुए मौलवी साहब गलत बयान करते हैं, गलत तफसीर बयान करते हैं। इसका मतलब ये कि सही कर रहे हैं, आप वहां सुन रहे हैं। तो फिर सहारनपुर गए, उलमा से मशवरा किया, देवबंद गए, उलमा से मशवरा किया, फिर फरमाया मैं इस्तिखारा करता हूँ। हजरत ने कई दिनों तक इस्तिखारा किया,
फिर इसके बाद रोते हुए वहां से निकले हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, काम असल है, काम असल है। अब रहा मसला कि ये इख्तिलाफ हो गया, अल्लाह की क्या हिकमत है, काम की हिफाजत करना मकसूद था। पहले फैज़ा इलाही को मरकज बनाया, इसके बाद अल्लाह ने बंबई ने नेहरोल बहुत बड़ा मरकज दे दिया। मुल्कों से जमातें आ रही है, मुल्कों में जमातें जा रही है, अल्लाह ने दोनों ने अमल बदल दे दिए हैं। अब रहा मसला, हर जगह पर कुछ वो ज्यादा है, कुछ हम ज्यादा है, लोग डराते हैं। सहाबा को भी लोगों ने डराया। काल अन्नास इन्नन्नास क़द जमऊहुम फख्शवहुम, इनसे डरो, वो यूं करेंगे, वो यूं करेंगे। फज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये हमारी जबानों पर होना चाहिए। कोई कुछ नहीं कर सकता, इखलास, इज्तिमाइयत, मशवरे के साथ हम चलते रहेंगे। कोई कितना ही प्लान बनाए कुछ नहीं कर सकता। हमारा यकीन बढ़ना चाहिए और हमारी जबानों पर यह होना चाहिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। Yang terakhir keluar dari Nizamuddin daripada masyayikh kita adalah Maulana Ibrahim Damat Barakatuh. Sebenarnya beliau masih ingin punya pengharapan untuk merayu atau meluruskan Maulana Sa'ad Damat Barakatuh, tapi tetap tidak juga. Sementara beliau masih mendengarkan bayan-bayan tersebut dan diingatkan, tapi tidak digubris juga. Maka hadirin alim ulama mengatakan, mendatangi beliau, Maulana Ibrahim, keberadaan kamu yang terus-menerus di Nizamuddin dan Maulana Sa'ad terus bayan dengan sesuai apa yang dia kehendaki, ini ada merupakan legitimasi atas bayan-bayan Maulana Sa'ad tersebut. Maka keberadaan kamu ini pengakuan itu adalah benar, karena kamu masih ada. Orang pun melihat, oh Maulana Ibrahim masih ada di Nizamuddin. Maka ulama-ulama dari Dioban, dari Lucknow, dari Gujarat minta kepada Maulana Ibrahim juga tinggalkan Nizamuddin tersebut. Beliau tadi bermusyawarah, datang ke Gujarat, datang ke Lucknow, datang ke Dioban, bertanya pada ulama. Rata-rata ulama mengatakan, kamu keluar daripada Nizamuddin, tinggalkan. Karena keberadaan kamu terus-menerus di sana seakan-akan menyetujui apa yang dibayangkan oleh Maulana Sa'ad yang telah ditegur oleh sekian banyak alim ulama. Maka beliau katakan, kalau gitu tunggu, saya akan istikharah. Istikharah berhari-hari lama beliau istikharah. Maka akhirnya buat beliau keputusan, saya pun akan tinggalkan Nizamuddin. Akhirnya beliau orang yang terakhir daripada masyarakat meninggalkan Nizamuddin, tapi dengan tangisan. Karena sudah 50 tahun beliau berkhidmat di sana, menangis sebagaimana tangisan Nabi SAW ketika meninggalkan kota Mekah. Ham bahut si jagahon par gaye, Sulawesi. Beliau katakan selanjutnya hadirin, masyarakat kita meninggalkan Nizamuddin, tapi bukan berhenti kerja, tidak. Tetap Allah gantikan tempat berkumpul. Maka di New Delhi sendiri ada masjid namanya Faiz Ilahi. Begitu pula di Bombay, 1,5 jam lebih kurang dari bandara namanya Nehrul. Maka masyayikh kita berkumpul dan berkumpul. Begitulah orang-orang yang mengarah kepada surah alam berkumpul. Hari demi hari bertambah dan bertambah. Tapi tetap intimidasi, provokasi diarahkan kepada mereka. Bahkan ditakut-takut, diancam dan sebagainya. Tapi apa yang dan itu ancaman sudah terjadi memang sejak di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Mereka orang-orang kafir menakut-takuti. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazarhum imana wa qalu hasbunallahu ni'mal wakil. Jadi mereka katakan itu orang-orang sudah kumpul untuk menghancurkan kalian, maka takutlah kalian pada mereka. Tapi mereka dengan ditakut-takuti bukan tambah takut, maka tambah semangat dalam kerja tersebut. Maka walaupun diintimidasi, diprovokasi, macam-macam fitnah dilontarkan dan usaha-usaha untuk menggagalkan itu markas ada, tapi alhamdulillah hari demi hari orang semakin melihat kebenaran daripada ini kerja daripada para masyayikh kita. Maka itu dua markas semakin hari semakin berkembang, bahkan jamaah pun dikeluarkan dan datang ke sana, baik yang di New Delhi sendiri di Faiz Ilahi ataupun yang di Nehrul di Bombay sana. हम बहुत सी जगह सुलावेसी में गए। अब हमारे साथी कहने लगे, अमीर साहब हम थोड़े हैं, वो ज्यादा है, हर वक्त डर रहता है, पता नहीं क्या करेंगे। कुरान सहाबा से कह रहा है, वज़कुरू इद अंतुम कलीलुल मुस्तरफून फिल अर्द तखाफून अन यतखत्तफकुमुन नास। तुम्हें खतरा है कि लोग तुम्हें उछल लेंगे। अरे फावाकुम, अल्लाह तुम्हें ठिकाने देगा। व अय्यदकुम बिनस्रिही, खुदा अपनी मदद के जरिए से तुम्हारी तायीद करेगा। व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तो अल्लाह तुम्हें हलाल रोजी देगा। ये 3 वादे हैं, घबराओ मत। कम होना ज्यादा होना अल्लाह के असल नहीं है। काम को वसूल के साथ चलो, अपनी हिफाजत करो, काम की हिफाजत करो, आलम शुरा के साथ लगे रहो। और आखिरी हमारी दरखास्त ये है कि बुजुर्गान दीन हर जगह नहीं जा सकते। अरे इंडोनेशिया वाले आओ, नेरोल में आओ, फैज़े इलाही में आओ,
बुजुर्गों के पास रहो, इनसे इस्तिफादा करो। आज कोई मौलाना इलियास से, मौलाना यूसुफ साहब से, मौलाना इनाम साहब से, मौलाना उमर साहब से कोई इस्तिफादा करना चाहे नहीं कर सकता। मौका हाथ से निकल गया। अभी हमारे बड़े हयात है, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत दे। करो सफर, इनकी सोहबत में रहो, इनके बयानों को सुनो, कल वो भी नहीं होंगे, फिर पछताना पड़ेगा। Beliau katakan kami bergerak di Sulawesi Selatan dan pergi satu tempat ke tempat yang lain. Alhamdulillah kesemangatan orang-orang untuk kembali kepada usul dakwah yang benar, 3 hadiraji ada ke SA. Tapi sebagian tempat ada orang mengatakan kami ini sedikit, kami ini minoritas dan sebagainya. Bagaimana? Maka saya katakan jangan takut. Buat kerja dengan sungguh-sungguh, buat kerja dengan sungguh-sungguh. Dan Allah sudah mengingatkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan juga untuk kita, wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardh. Ingat ketika kalian sedikit, bahkan merasa lemah, di bumi. Wadhkuru antum qalilun mustad'afuna fil ardh, fa ayyadakum binasrihi. Wadhkuru antum qalilun mustad'afuna fil ardh, takhafuna yatakhafun nas. Kalian takut nanti manusia akan nyiksa kalian, menyakiti kalian. Tapi fa'ayyadakum binas Allah fa'awakum, Allah pun akhirnya tampung kalian, lindungi kalian. Wa ayyadakum binasrihi, dan Allah bantu kalian dengan pertolongan sedih. Wa razaqakum minat thayyibat, Allah memberikan rezeki yang baik-baik untuk kalian. Maka apa yang terjadi kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dulu mereka sedikit minoritas, tapi Allah Subhanahu wa taala tenangkan. Yang penting kalian terus buat dan terus buat, bertawakal, jangan takut dengan intimidasi, provokasi, WA yang mereka buat dan sebagainya. Nanti Allah akan lindungi kita dan Allah akan berikan kekuatan, bahkan diberikan rezeki yang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi zaman dahulu kembali juga hari ini. Jangan merasa sedikit, yakinkan Allah Subhanahu bersama kita. Maka beliau katakan buat kerja terus, tapi gandengkan diri ketika dengan para masyayikh, yaitu para masyayikh kita di surah Al-Alami. Beliau katakan kita sekarang sudah bapak-bapak tidak sempat lagi untuk berjumpa dengan Syekh Ilyas, Syekh Yusuf, Maulana Inamul Hasan, Maulana Umar Palampuri, yang dulu bayan-bayan beliau Masya Allah kita lihat sebagai lisanul dakwah. Mereka sudah pergi, tapi orang-orang yang bersohbah dengan mereka masih ada. Maulana Ibrahim masih ada, Maulana Ahmad Lah dan yang lain-lain masih banyak ada. Mereka sekarang berada di Faiz Ilahi, di New Delhi ataupun di Nehrul sana, di Bombay. Maka kesempatan untuk bersumpah dengan mereka masih ada. Maka tuan-tuan, mari berjumpai mereka, datang bersumpah dengan mereka. Begitu dalam istimewa di Rewe ini, kita datang bersumpah. Nanti kalau tuan terlambat hari ini akan menyesal besok hari nanti. Oke? Bersedia? Khali bayan sunnya nahi, kam se kam chilla lekar आओ. Jadi jangan sampai cuma dengan bayan, tapi buktikan minimal saya akan berangkat ke India sana 40 hari. Jumpa dengan kita. हम लोग बहुत खुश है माशाल्लाह, इंडोनेशिया से बहुत काम हो रहा है। अच्छा, अल्लाह आपको खूब तरक्की दे, चारों तरफ से अल्लाह बहुत हिफाजत फरमाए। बस हम ये कहते हैं इज्तिमाइयत, मशवरा और इखलास के साथ आलमी शुरा के बुजुर्गों के साथ चलते रहोगे, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। Jadi saya lihat di Indonesia Masya Allah tuan-tuan semangat dalam kerja sungguh-sungguh, bahkan juga ikram kepada tamu-tamu yang datang. Maka saya berharap buat kerja dan terus, tapi dengan 3 tadi, musyawarah, begitu istimaiyah dan juga dengan ikhlas. Maka kalau anda terus buat kerja dengan 3 tadi, Allah Subhanahu akan pelihara anda, juga pelihara ini kerja. Bersedia insyaallah? Baik. Maka secepatnya persiapan untuk kawan-kawan. Ini istimewa Rewe tanggal 1 November ini. Maka sponsornya mulai diurus mulai sekarang. Untuk India alhamdulillah kemudahan. Dan insyaallah kita berharap tetap nanti di istimewa Tonggi juga akan dihandle oleh Syura Alami juga. Sehingga nanti persiapan di kebun di Ancol, nanti kawan-kawan dari transportasi supaya diperbanyak. Dulu Pakistan semua di kebun jeruk sana, sekarang sudah ke sini semua. Begitulah India 70% ke sini. Nanti Bangladesh juga akan kemari semua. Maka kita semakin sibuk dan semakin terbuka ini. Yang mereka tadi katakan itu, sekarang mereka yang itu. Kita semua APB insyaallah. Bersedia? Doa. हमने मौलाना से दरखास्त की है कि आपके दिसंबर के जोड़ में मौलाना इब्राहिम साहब को दावत दो। जवानों ने देखा नहीं, इंशाअल्लाह आप इनका चेहरा देखो कि आपके समझ में आएगा कि हक यही है। Begitu pula beliau tadi minta sama saya juga ngomong dengan Pak Muslihuddin seperti sampaikan bahwasanya nanti pada musyawarah nasional kita Desember tanggal berapa, tanggal 7 apa tanggal awal-awal Desember nanti, supaya kita minta Maulana Ibrahim yang hadir kemari insyaallah. Waktu mungkin bersama rombongan dalam waktu 1 minggu di sini atau 5 hari di sini. Saya bilang insyaallah kita akan ajukan, tapi beliau katakan segera
waktu kami pulang ini beliau 2 minggu, nanti kami akan bawakan suratnya supaya nanti di Rewin juga akan dibicarakan. Memang kita akan bicarakan nanti di Rewin, bahkan kita minta supaya ada juru kudama, apakah 3 tempat, 5 tempat atau 1 tempat saja. Yang penting kehadiran masyarakat kita memang inginkan. Tapi beliau ingin cepat. Beliau katakan kami akan bawakan suratnya tersebut, supaya nanti di Istimewa Rewin sehingga mengulangi saja lagi. Insyaallah, mudah-mudahan sebelum beliau berangkat sudah kita buatkan itu surat semua. Yang penting kalian doa semua, insyaallah dengan keikhlasan kalian nanti Allah akan hadirkan masyarakat kita. Mari kita doa supaya yang telah meninggal dunia diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Dr. Nur juga Fazul Fakar yang banyak berkorban, dan yang sakit-sakit juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang banyak hutang ditunaikan hutangnya oleh Allah. Begitu yang akan ada niat untuk berangkat dan berangkat, mudah-mudahan dimudahkan untuk berangkat, bahkan dimudahkan haji dan umrah. Hidup kita berakhir di kota Madinah Munawwarah. Ala hadinna wa al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ummahatina wa li ajdatina wa li ikhwanina wa akhawatina wa li a'amana wa li ammatina wa li akhwalina wa li khalatina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li muallimina wa li man 'allamna ولذوي الحقوق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن هدانا وهديناه للخير والأصوات وصينا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنزل هدايتك ورحماتك وبركاتك على هذه البلد وسائر بلاد المسلمين اللهم استخدمنا واستخدم رجالهم وشبابهم لنصرة هذا الدين دعاة إليك ولدينك في مشارق مغاربها واجعل نساءنا ونساء متحجبات متنقبات غير متبرجات واجعلهن كنساء الصحابة واجعل أولادنا وأولادهم الصالحين واجعلهم للقرآن حفظا ya Allah ya Tuhan kami ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah lembaran hitam yang Allah hapuskanlah semuanya ya Allah mudahkan kami untuk mulai hidupkan dengan lembaran putih di depan kami ya Allah ya Allah gunakanlah kami untuk membawa ini dakwah sampai di akhir kehidupan kami ya Allah sampaikan langkah kami ke Eropa ke Amerika ke Rusia bahkan seluruh persada ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah wafatnya kami di kota Madinah di samping Rasulmu ya Allah sertakan istri-istri kami dalam keadaan sangat mulia ya Allah kubur itu gelap akan diterima doa daripada anak cucu kami ya Allah jadikan anak cucu kami hafiz alim dai ya Allah teman-teman kami yang sakit sembuhkan ya Allah yang telah mendahului kami angkatkanlah derajat mereka ya Allah tunaikanlah semua hutang-hutang kami ya Allah perlihatkan ini kerja ya Allah kembalikan saudara kami yang di sebelah sana kepada jalan yang kau ridhai ya Allah satukan kami dalam kerja yang kau ridhai ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun وجعلنا المتقين إماما اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا أيمن ومن شمال ومن فوق ومن من تحت أرجلنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين